हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जी पिला माने तो मैंने देखि पारथबो जे कौन ना आज हम डिस्कशन करबा तमर जो एडिट ऑप्शन ऊपर जे तमर आगो को एडिट ऑप्शन आसीबो कि आउ थरे तमर आसीबो ना एडिट ऑप्शन जहाँ द्वारा कि तुम जहाँ सब भूल भाल होती से सब जिन तुम करेक्शन कर आउे नेक्स्ट है कौन ना बहुत सारे छुआ तुम फॉर्म एप्लाय रे कौन कर ना ओबीसी पकईच तुम जापर न कि कारणवश तो से कौन है तुम से ओबीसी रु एससीबीसी को चेंज कर कि तो यही रिगार्डिंग संपूर्ण भिडियोटी माने है कौन संपूर्ण भिडियोटी आमर जो एडिट ऑप्शन बा चेंज करने ऑप्शन आउ थे आसब कि ना ताऊपर संपूर्ण भिडियोटी भिडियो भल लगे लाइक कर शेयर कर बहुत तुम सब्सक्राइब कर आ भिडियोटी बहुत मात्रा तुम इनफर्मेटिव हम से कौन कर स्टार्टिंग नहीं एंडिंग पर्यंत टिल कौन कर देखी चल तो ठीक है चलो भिडियो कौन करवा स्टार्ट करवा तो पिला माने जदि देखिबो तुमर कौन है ना तुम जो साम्स आसी जे कौन ना तार जो टाइम लाइन आसाला से टाइम लाइन में गोटे जिनस तुम मेनसन थिला देख यही जो जिनसा तुम मेनसन थिला कौन ना 7 नंबरटा देख तुम मैंने लिखाई कौन तो आप्लिकांट्स विश टू बी कनसिडर्ड जैसे स्कॉलरशिप तुम रेसिडेंट इनकम कास्ट सर्टिफिकेट दरकार जे जिते तुम कौन कर फिलिंग अफ कर कमन आप्लिकेशन फॉर्म तुम एप्लाय कर कौन करा पड़ो ना सब जिन दरकार है देख लिखाई कौन ये तुम कमन आप्लिकेशन फॉर्म ये कर कौन करा पड़ो पूर्व तुमको ये सब सर्टिफिकेट गुड़ाक रेडी कर रखते पड़ो किंतु देख लिखाई इफ द आप्लिकेंट्स फेल टू अपलोड द सर्टिफिकेट्स ड्यूरिंग द फिलिंग अफ द कमन आप्लिकेशन फॉर्म जी तुम कौन कर ना अप्लाय बेले धर ये सब सर्टिफिकेट को तुम कौन कर ना फेल अच्छ माने जे अपलोड करना कौन कारणवश ताले कौन हम ना एनदर चांस विल बी गिवेन आउ थे तुमको चांस दिज्व कौन ना टू अपलोड द सर्टिफिकेट्स ड्यूरिंग द अपडेशन ऑफ ग्रेजुएशन मार्क्स और चॉइस फिलिंग प्रिफरेंस बा टाइम लाइन ता माने या कहूँ जे तुमको आउ थे सी तुम जो अच्छी कास्ट इनकम रेसिडेंट जो अच्छी ये 3टा सर्टिफिकेट को तुमको सी अपडेट करने आउ थे सी कौन कर दब ना तुम सी सुजोग दब मन रखिथ सुजोग दब कौन करने ना कास्ट इनकम रेसिडेंट आउ थे तुम चेंज करने बुझ कथा कौन मैंने सर्टिफिकेट को अपलोड करने तो ये गोटे बड़ क्वेश्चन आसुच्ची तुम सर्टिफिकेट तुम अपलोड करने सी तुम कौन कर ना दब आ से समय तुम कास्ट को तुम चेंज कर कि ना ना तुम फिलअप कर तुम फिलअप कर कौन ना जेनेल कि एससी कि एसटी कि ओबीसी कि एससीबीसी तुम सब फिलअप कर तो सही हिसाब से तुम कौन हम ना रैंक लिस्ट बाहर मन रखिथ रैंक लिस्ट बाहर सारा पर कौन बाहर ना ग्रेजुएशन मार्क अपलोड कर चॉइस फिलिंग अपलोड कर तो रैंक लिस्ट बाहर सारा पर पूर्व तो नुह ना रिजल्ट बाहर सारा पर सब जिन आसो तो यही समय जदि कौन हो तुम रेसिडेंट इनकम कास्ट सर्टिफिकेट तुम अपलोड कर से समय तुम जो फिलअप कर फिलअपटा तुम चेंज कर कि मत लगुच हाँ हो पार कारण पूर्व वर्ष भी होता है जदि भी न हुए ताहले तुम जब बारंबार बारंबार साम्स को बा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कॉल कर तो मुझे कहीदेवी वीडियो शेष में कहीदेवी जी कौन ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या सहित कथा है से कौन करेंगे ना तुमको तुम कथा से कौन करेंगे ना पूरा कनसीडर करेंगे कौ मान कॉल कले डायरेक्ट ऑफिसर मान तुम कंटाक्ट देदेवी जोटा तुम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वेबसाइट अच्छी ता थ्रो तुम कौन कर बारंबार बारंबार बहुत छुआ डिमांड कले कौन हम ना तुम एडिटिंग ऑप्शन आसीपर आउ थे जहाँ भी जहाँ सब भूल अच्छी से सब जिन तुम कौन कर आउ थे तुम एडिट कर बुझ कथा कौन तो है कौन ताहले कौन है तुम सर्टिफिकेट सब जिन अपलोड कर या व्यतीत तुम कौन है आउ कौन चेंज कर ना ग्रेजुएशन मार्क जेहतु अपलोड करने तो ग्रेजुएशन मार्क आउ थे अपलोड कर जो मैंने भूल भाल ग्रेजुएशन अपलोड कर भी कौन कर ना तुम्हें चेंज कर है से मैंने भी चाहिए कौन है तुम परिवर्तन कर जो मैंने ग्रेजुएशन में भूल भाल कर जो मैंने ठीक ठाक कर तो दरकार नहीं कौन है आउ थे ग्रेजुएशन अपलोड करने बुझ कथा कौन तो आराम से चिंता करा दरकार ना कि जो मैंने न कर कौन कर ना तुम चेंज कर आउ जो मैंने भूल भाल कर भी कौन कर ना चेंज कर बुझ कथा एवं नेक्स्ट जिन आसूँ ये तो एतिकी दुईटा जिनस नुह या व्यतीत आहरी बहुत सारा जिन अच्छी जो गुड़ा कौन है तुम बहुत सारा छुआ भूल होती कार नेम हो कार डेट ऑफ बर्थ हो कार मोबाइल नंबर हो कार ईमेल आईडी हो है ईमेल आईडी हो कि तुम अदर जो सब जिन रोचे डिटेल्स गुड़ाक से गुड़ाक तुम भूल भाल तुम करदे तो से गुड़ा चेंज करहब कि ना देख तुम से गुड़ाक चेंज करने गवर्नमेंट दौ ना कारण एडिटिंग ऑप्शन बेले भी से गुड़ाक चेंज करने गवर्नमेंट दे नाला है ईमेल आईडी को कदापि तो कौन करहबनी ना चेंज करहब ना किंतु तुम कौन कर ना तुम
ଅଦର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା କଲ୍ କରିବ। ତୁମର କାଷ୍ଟ ହଉ ହେଲା, କାଷ୍ଟ ହଉ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ହଉ, ତୁମ ଘର କି ଅଦର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ହଉ ବା ତୁମର ନେମ୍ ହଉ, ଫାଦର୍ସ ବା ମଦର୍ସ ନେମ୍ ହଉ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ଯେଉଁଟା ସବୁ ମେନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ହେଲା, ଯେ ଆଧାର ନମ୍ବର ବା ତୁମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ତୁମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ବି ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ତୁମ ଏଇ ଟାଇମ୍ର ଲାଇନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଅଦର ଯେଉଁଟା ଜିନିଷଟା ତୁମକୁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଟା ନା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁ କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ जी ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ ବା ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ତୁମର ଇମେଲକୁ ମେଲ୍ କରିପାରିବ ବା ତୁମ ସାମ୍ସ କଥା ଯିଏ ବୁଝୁଛି ଦେଖ, ସାମ୍ସ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଥା ଯିଏ ବୁଝୁଛି ହେଲେ କ'ଣ ନା ମୌସୁମୀ ନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ରଜତ କୁମାର ମାନସିଂ ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏମାନଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରିପାରିବ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ। ବୁଝୁଛ କଥା, ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି କଲ୍ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି କନସିଡର କଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ସାମ୍ସକୁ କଲ୍ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସାମ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ଯେ କ'ଣ କଥା ଗୋଟେ ସାମ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ କଲ୍ କରି ସବୁ ବତାଉଛନ୍ତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ ବାସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅସୁବିଧା ସେୟାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ୟା ଥ୍ରୋରେ ତୁମେ ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା କନସିଡର କରିବେ। ଯଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଛୁଆମାନେ ତୁମେ ଯେ କ'ଣ କର ନା ଏଡ଼ିଟ୍ ପାଇଁ ତୁମେ କଲ୍ କଲ, ଆଉ ଥରେ ମେ ବି ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଛୁଆ ଚାହିଁଲ କ'ଣ ନା ଏଡ଼ିଟ୍ ପାଇଁ। ବୁଝୁଛ କଥା କ'ଣ? ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଇସବୁ ଏଡ଼ିଟ୍ ପାଇଁ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କରିଦେଲେ ଭଲ। କାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବ ତୁମ କାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ OBC ଧର ଅଛି, ଧର ତୁମର ଧର ଯେଉଁଠି ଛୁଆର ଧର ଏସିବିସି ଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାର OBCର ବାହାରି ଆସିବ, OBCର ବା ଜେନେରାଲ ର୍ୟାଙ୍କ ତାର ଆସିବ, ତାର ଆସିବନି କ'ଣ ଏସିବିସି ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ତା ନାଁ ଆସିବନି ବା ତା ଲିଷ୍ଟ ଆସିବନି, ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଏଇ ଯେତିକି ସବୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କଲ୍ କର, ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର, କଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେ ବି ସେମାନେ ଯଦି ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ନା କାଇଣ୍ଡ ହେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ 1-2 ଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନା କାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ବୁଝୁଛ କଥା କ'ଣ? ହେଟା ତୁମେ ଦେଖ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବ, ହେଟା ପରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସେ ତୁମ ଜେନେରାଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଯିବ, ଏସିବିସି ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଯିବ, OBC ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଯିବ, ST ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଯିବ, SC ର୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଯିବ, ତ ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମର ତ ନାଁ ଥିବନି, କାରଣ ତୁମର ତ ଜେନେରାଲ ର୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବ, କାରଣ OBC ଯେଉଁମାନେ ଦେଇ ପକାଇଛ ତ OBC ମୁଁ କହିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର ବା ତୁମେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ବା RI ଅଫିସ୍ରେ ପଚାର ଯେ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା SCBC ଯଦି ବାହାରି ପାରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କର SCBCଟା ହିଁ ଓନ୍ଲି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇପାରିବ। OBCରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ OBCରେ ପକାଇଛ ଆଉ SCBCରେ କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତା ମନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ? ତୁମେ ଯାହା ପକାଇଛ ବା ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ SCBC ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ତ SCBC ତୁମର ଯଦି ବାହାରୁଛି, ଯଦି ଭୁଲରେ ତୁମେ OBC ପକାଇ ଦେଇଛ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ତୁମକୁ ଏଇଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଯଦି କ'ଣ କରିବ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ମେ ବି 2-4ଟା 10ଟା 15ଟା ଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମେ ବି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ ନା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଶା ଅଛି, କାରଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଛୁଆମାନେ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ବୁଝ କଥା କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ନା OBC ମନେ ରଖିବ, OBC ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଛ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ବୁଝ ଯେ ତୁମର SCBC ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ, SCBC ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ, ବା ତୁମର କିଛି ଛୁଆ ଜେନେରାଲ ପକାଇ ଦେଇଥିବ, କିଛି ଛୁଆ ଅଦର କାଷ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇଥିବ, ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତୁମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ସବୁ ନମ୍ବରରେ ବା ସାମ୍ସକୁ ବି କଲ୍ କର କି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଯେ OBC ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ OBCରେ ପକାଇଛ ସେମାନେ କନଫର୍ମ ହୁଅ ଯେ ତୁମେ ଯେ ତୁମର SCBC ବାହାରୁଛି, ଯଦି କନଫର୍ମ ତୁମେ SCBC ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କର କାଷ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କଲେ ତୁମକୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳିବ,
कारण ओबीसी तुम ओडिशा रिजर्वेशन ना एटी गले तुम रिजर्वेशन मिल कट ऑफ कम जीव एससीबीसी तर जनरल इधर कट ऑफ जाइए केते तर 60 पॉइंट आपाई 3-4 मार्क कम जीव सिलेक्शन हमार पॉसिबिलिटी अधिका रहिबो तो सेही सब जिनिस करबा दरकार आ जदि तुम से सब जिनिस न करि पारछो तापाई स्वर उत्तोलन न करि पारछो ताले थाई लाभ कौन तो जहाँ अच्छी तब सी थाओ बुझ कथा कौन तो यहीटा जिनटा है कौन तुम डिटेल्स एडिट ऑप्शन तो आसो तुम ग्रेजुएशन मार्क अपलोड समय आसो कि सब एडिट ऑप्शन आसो ना बुझ कथा ओनली ग्रेजुएशन मार्क अपलोड करने आसो तो वर्तमान समय तुम ग्रेजुएशन मार्क को जब कौन करने चाहो अपलोड करने सहित तुम अदर जहाँ सब भूल भाल अच्छी ताको तुम कौन करने चाहो करेक्ट करने चाहो ताले यही कंटाक्ट नंबर कॉल कर पचार बुझ आउ रिक्वेस्ट कर जे कौन ना एडिट ऑप्शन गोटे 2 दिन टाइम दे पारती से प्लीज है आराम से दे पारे आउ से अकॉर्डिंगली तुम मैंने कौन कर एडिट कर तो ये रहा ऑल डिटेल्स धन्यवाद आशा कर तुम बहुत इनफॉर्मेटिव हम भल लगता है लाइक कर शेयर कर आराम से कौन कर ना समस्ते तुम मैंने चिंता कर सब जहाँ डिसीजन नंबर नि आउ कमेंट रे जनाओ है धन्यवाद।